Good afternoon. Good morning, ma'am. Good afternoon, Samar. How are you kids? How are you doing? Ma'am, we were doing the chapter market around us. I'm asking how are you all? Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, how's it going? How were your vacations, children? Did you enjoy? Fine, children. So, we're doing markets around us, right? Till where have we done the chapter? Am I audible to you people? Kids, can you hear me? Am I audible? Yes, अच्छा ma'am. मोबाइल Hanji. So, till where have we done the chapter? Everybody keep your cameras open. Samar, Suryan, Shruti, Navira. Everybody's camera must be open. Hanji. So have we started the chapter in your class? Yes, ma'am, we have started. Till where we have done? कहाँ तक कर लिया था हमने? बोलो बेटा. Navira, any remembrance? No? Shall we start from the beginning then? I think we have discussed what market is, right? And we also discussed how the farmers sell their stuff in the markets. They have to sell, like, there are three ways which they can sell. First method is to sell it directly to the traders, right? Because the traders are the ones whom they have taken money from in advance, right? Traders से ये लोग पैसे advance लेते हैं to grow their crops, क्योंकि हमारे farmers का इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने पैसे से crops grow कर पाए. Then the traders force these farmers कि वो अपने products इनको ही sell करें, that too at the price which is lesser than the market price. जो भी market price चल रहा होता है उससे कम rates पे, just because they have given them loans, right? Okay, let's read from the second method, page number 38, second method. पढ़ो नवीरा. Yeah. हम कहाँ से पढ़ें? Page number 38, last paragraph. The second method adopted by the Indian farmer is to dispose of produce in the weekly villages markets known as the haats. Besides, fairs are held once a year in important villages or towns in connection with religious festivals. In haats and fairs, the farmers bring their produce as well as livestock and sell them. This type of marketing is an example of retail marketing. Under retail marketing, the goods are sold directly to the consumer. Under this, there are no intermediaries. So the farmers, so the farmers, farmers can earn profit. But most of the farmer cannot use this method as most of them have already taken advance from money lenders or they are in the debt trap. Okay. Thank you, Navira. So second method क्या होता है कि वो चाहे तो अपना जो विलेज में मंडीज लगती है, साल में एक बार लगती है, they could go to those mandis and then they can sell their stuff in those mandis, right? But this is not very feasible for the farmers because most of the farmers are under some debt trap, right? उन्हें किसी से एडवांस दे रखा होता है and
those people tell them to sell their products to them at a certain price only, है ना? इसीलिए many of them are not able to go to such places. ठीक है? Next पढ़ो समर, the third method. समर, समर वर्मा, can you help me? Yes, ma'am. हाँ जी. Right now the third method. Kindly read बेटा. Summer, please read. Ma'am, so there have to read You have to read from page number 39. from the third method. Yes, from the third method. Okay, ma'am. The third method is through the mandis in small and large towns. The mandi may be located at a distance of several miles, and therefore the farmer has to make special efforts to carry his produce to the mandi. In the mandis, there are brokers or dalals who help the farmers to dispose of their produce to the wholesalers known as arhatiyas. The wholesalers may dispose of the agricultural dispose produce which they have purchased from the farmers to retailers or flour mills and processing units. For instance, in the case of cotton, the wholesaler sells to the cotton ginning factories, and in the case of food grains like wheat, he sells to the flour mills or to the retailer. Okay. जो अर्बन मंडीज होती है वहां पे अपने सामान बेचते हैं. अर्बन मंडीज में क्या होता है? दे गेट वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स, राइट? अब ये लोग क्या करते हैं? ये फार्मर सामान लेके या तो फ्लावर मिल्स, मतलब या तो मिल्स में बेचते हैं या फिर फैक्ट्री में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉटन खरीदी तो कॉटन में कॉटन फैक्ट्री में भेजूंगी, राइट? और अगर मैंने फ्लावर खरीद लाइक वीट खरीदा, आई विल सेल द वीट टू द फ्लावर मिल और डायरेक्टली टू द रिटेलर, राइट? समर, माइक ऑफ. Fine. Now the next topic which we have is that is like you saw these type of markets. What do we call them? देखो बहन को मतलब मेरा तो समझाया नहीं खत्म हो गया भैया मार मिले बहन के मारे होते दो थप्पड़ Ashish. बड़ा करवा तो कोई लड़का एक को बताओ बाने मेरी करवा दे ये महाराज ने मेरी करवा दी तो लड़का Sorry guys. Chalo. So now we see that all these examples are of unregulated markets. Examples पढ़े कि कैसे market के थे? These examples were of unregulated markets, right? जहाँ पर क्या होता है? जो condition है मंडीज की, markets की, they are very poor, right? The method of transaction is generally कैसा होता है? Is not in against the interest of the farmer. मतलब जो भी transactions होता है उसमें farmer का कोई भी फायदा नहीं होता है. Farmer is at always at loss only, right? The number of intermediaries and the middlemen and the consumer too many. बहुत सारे middlemen होते हैं, बहुत सारे intermediaries होते हैं, right? So because of which the margin going to the farmer is very less and the margin going to the intermediaries is very large. जो बीच वाले होते हैं intermediaries वो तो बहुत सारा कमा लेते हैं, but the farmer earns very less. ठीक है? Next point, the farmers do not get any information about the ruling price. क्या price चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसका कुछ अंदाजा ही नहीं होता है farmers को, because of which the farmers have to accept whatever price is given to them by the traders. So traders जो भी price देते हैं
They accepted. Now, in unregulated market की problem को solve करने के लिए ही the government of India has opened regulated markets. Right? Now let's read what these regulated markets are. Riddhi, you read. Okay, ma'am. Regulated markets. A regulated market is started under the law either for any specific community or for a group of communities. Such a market is administered by market community, which consists of representative of state government, the legal bodies, the trades, the commission agents, or the dullars are, and the farmers themselves. The community is appointed by the government for a specific period and is in, entrusted with management of the market. The market community fixes the market charges such as the commission of the commission to be changed. It ensured that no dalal represent either the buyer or the seller. If represent unauthorized deduction from the price paid to the farmer and ensure that correct weight and measure are always used. The community hear all complaints and sheltered them. The system of regulated markets have been found to be very useful in removing fraudulent practice followed by brokers and commissions agents in the standardizing market practice. They have helped farmers to secure fair price for their products and to come to the market without fear of being cheated. They have helped in using standard measures and weight without the country. Hence, it is political of the government to convert all markets in the country into a regulated type. Now, you must have understood that regulated markets are more useful for farmers than the unregulated markets. But it is responsible for all the farmers to sell their products in the regulated markets. There are many factors which decide to assess of market to the pupil. First, Okay, Riddhi. ability of Great. the Thank market. you so much, Riddhi. Whatever you read for us, thank you so much for that. So we already read what a regulated market is, right? Now, in a regulated market, the law either right under the law either for any specific commodity or for a group of commodities. Regulated market गवर्नमेंट सेटअप करती है किसी एक ही कमोडिटी के लिए भी सेटअप कर सकती है और वैरायटी ऑफ कमोडिटीज के लिए भी सेटअप कर सकती है राइट सच मार्केट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ मार्केट कमिटी इस मार्केट को एडमिनिस्टर करने के लिए हम एक मार्केट कमिटी सेटअप करते हैं जिसमें कौन कौन होता है इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट राइट the legal bodies such as the district board, the traders, the commission agents, the dalals, and the farmers themselves. ये सब लोग मिलके क्या बनाते हैं एक market committee. Now ये committee appoint की जाती है by the government for a specific period, right? And is entrusted with the management of the market, right? कि जो management of the market है अच्छे से कर पाएंगे. अब इस market company का काम क्या होता है? सबसे पहला काम तो इनका ये है to fixing the price. First job is to fix the price कि भाई ऐसा ना हो कि किसी को महंगा सामान मिल रहा है किसी को सस्ता मिल रहा है so this market committee first of all fix the prices सबसे पहले तो prices को
फिक्स करके रखती है कि भाई सबको इक्वली वो मिले, किसको महंगा किसको सस्ता ना पड़े, राइट। एंड इट ensures that no दलाल represents the buyer or seller। जो दलाल है वो इंडिविजुअली काम करे, वो किसी बायर सेलर को रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, है ना। It also prevents the unauthorized deductions from the price paid to the farmer, कि ऐसे नहीं प्राइस जो फार्मर्स को पे रहे हैं उसमें फालतू का पैसा काट ले, इस चीज का टैक्स उस चीज का टैक्स, ये सब नहीं होना चाहिए। Then they also ensure that correct weight and measures are always used। वरना आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि what happens in the markets is they are using weights, मतलब weights का जो है या तो वो हल्के होंगे या फिर वहाँ पे उसमें जो measures है उनमें उन्होंने मैग्नेट लगा दिए जिससे कि आपको सही weight ही पता चलता है, and that's how they con the farmer। So they try to avoid such practices, right? And the committee hears all the complaints and settles them। जो भी complaints होती है committee सबकी complaints को सुनती भी है, उन्हें settle भी करती है, right? Now, the system of regulated markets has been found to be very useful in रिमूविंग द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। जितनी भी फ्रॉडलेंट हो ना, जो भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रही है सोसाइटी में या मार्केट में, जो भी धोखाधड़ी हो रही है, उन सबको अवॉइड करने में मार्केट की सिस्टम बहुत हेल्प करता है। दे हैव हेल्प द फार्मर्स टू सिक्योर फेयर प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस। उनके प्रोड्यूस के लिए फेयर प्राइसेस मिलने चाहिए उनको, राइट। एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस टू कम टू द मार्केट विदाउट फियर ऑफ बीइंग चीट। जैसे कि फार्मर्स है उन्हें डर ना हो कि उन्हें कोई चीट कर रहा है, वो बिना इस डर के अपना मार्केट में आके दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस, right। They have helped in using standard measures and rates throughout the country। उन्होंने ये भी कोशिश की है कि पूरी कंट्री में एक जैसे स्टैंडर्ड्स और मेजर्स यूज किए जाए, कि ऐसा नहीं कहीं पे 1 किलो में 500 ग्राम है, कहीं पे 1 किलो में, मतलब कहीं पे 1,000 ग्राम है, कहीं पे 1 किलो में 500 ग्राम है, ऐसा भी कुछ ना हो, राइट। They also have in the policy of the government to convert all the markets into the country in the regulated price, right। ये चाह रहे हैं कि सारे जो मार्केट है हमारी कंट्री के वो सारे के सारे ही रेगुलेटेड मार्केट बन जाए, बट दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। दे आर जस्ट ट्राइंग इट, अभी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स है। अब हमें ये समझ रहा है रेगुलेटेड मार्केट्स होते क्या है, राइट। बट डू यू थिंक कि सारे के सारे फार्मर्स रेगुलेटेड मार्केट में जाके अपना सामान बेच पाते हैं? टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। टेल मी किड्स। टेल Tell me, kids, do you think all the farmers would go to the regulated markets? Yes, ma'am, I think yes. You think yes, Adeshika, कि सारे farmers जो है वो regulated market में easily जा सकते हैं? No, ma'am. Yes, Riddhi, I think Riddhi is correct. It is not possible for all the farmers to reach the regulated markets, right? इसके कई सारे factors भी given है ना? जैसे कि पहला फैक्टर क्या दे रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। हर जगह पे रेगुलेटेड मार्केट अवेलेबल ही नहीं है, तो फार्मर्स जा कहाँ से पाएंगे, राइट। द रेगुलेटेड मार्केट्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, right? So the farmers have to sell the produce to the money lenders only। Secondly, कन्वीनियंस। अब रेगुलेटेड मार्केट्स आर मोस्टली इन टाउन से थोड़ी दूर जगह पे होते हैं, वहां पे जाने के लिए अपना सामान ले जाने के लिए द फार्मर्स नीड्स प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। ऑफ फार्मर्स तो मैंने गरीब है, उनके पास इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है ही नहीं कि वो जा पाए, राइट। देन मोस्ट of the farmers are very poor and they don't possess any means of transport। ज्यादातर फार्मर्स कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, तो उनके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। So they don't possess any means of transport, इसमें नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट। हमें पता है कि हमारी कंट्री के ज्यादातर फार्मर्स जो है दे आर पुअर, राइट। उनके पास इतना पैसे नहीं कि वो अपना प्रोडक्शन भी खुद कर पाए, तो उसके लिए उन्हें ऑलरेडी मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं, राइट। अब जो पैसा लिया है उसकी वजह से मनी लेंडर्स उनको फोर्स करते हैं टू सेल द प्रोड्यूस टू देम। So this is again another reason because of which these farmers are unable to go to the markets। नेक्स्ट वी हैव द क्वालिटी, राइट। अब जो रेगुलेटेड मार्केट्स होते हैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है पहले उनकी क्वालिटी चेक होती है, उन्हें ग्रेड किया जाता है whether they are good or not, and accordingly they are मतलब उनको फिर ग्रेड करके उनकी प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग रहती है कि अगर अच्छी क्वालिटी का तो ज्यादा प्राइसिंग होगी, नहीं है तो कम प्राइसिंग होगी, राइट। अब ये जो ग्रेडिंग करते हैं ये करते हैं फूड इंस्पेक्टर्स। नाउ दीज फूड इंस्पेक्टर्स आर वेरी
करप्ट, ये फूड इंस्पेक्टर्स कहते हो काफी करप्ट है। ओके, सो एक ये भी लिख करा देते हैं। ठीक, तो वो लोग कहते हैं या तो हमें ब्राइब दो तभी हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से ग्रेड करेंगे, हम नहीं देंगे प्रोडक्ट्स कैन गेट गुड प्राइसेस। ठीक, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Cool then. Now to understand the concept of market, we have taken examples from rural India, right? अभी तक हमने सिर्फ rural India के examples पढ़े, पर क्या urban areas में markets नहीं होते हैं? क्यों भाई? Urban areas में market होते हैं नहीं होते, बताइए? मैम होते हैं Right, we have मैम, बट वो markets. डिफरेंट होते हैं Yes, मैम। what is the one major difference you find between the markets of urban areas and rural areas? Could you please tell me what's that one difference you find? बताइए बेटा, what is that one difference? मैम रूरल और अर्बन में हाँ, rural और urban में. Mom, we can say that the urban markets, the both sellers and buyers are aware of prices, quality, and quantity. ठीक है, राइट। अब देखो मेजर डिफरेंस से क्या होता है, एक तो द क्वालिटी एंड वैरायटी इज वे टू डिफरेंट इन अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स में इट इज लेस, बट इन अर्बन मार्केट्स इट्स बेटर, इट इज नाइसर। सेकेंडली क्या होता है कि जो रूरल मार्केट्स होते हैं ना, वहाँ पे बोथ द बायर एंड सेलर आर इलिटरेट, दोनों को ही ना ज्यादा अकल, ना ज्यादा पता है क्वालिटी का, किस क्वालिटी का कितना प्राइस होना चाहिए, कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, है ना। But in the urban markets, both the buyer and sellers are well educated and they know how much they should get, in what quantity, kya quality, everything. Right? So now we'll read about the urban markets. So let's read this weekly markets. कौन पढ़ेगा? Adeshika, you read. ओके मैम। Weekly markets. A weekly market is a market which is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at a different place the next. ठीक है, this is kind of the shops which we have put in. अब हम लोग भी कैसे shops लगाएंगे, ऐसे तो लगाएंगे। People come their everyday requirements. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They also have to pay wages to their workers. Not In wages. weekly market, these shops owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members, and hence do not need to hire workers. Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. It if a trader charges high price, people can go to another shop. One of the advantages of weekly market is that most things are available at one place. Whether you want vegetables, groceries, or cloth item, utensils, all of them can be found here. Consumers do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. थैंक यू देशिका। सो देखो वीकली मार्केट, जैसे हमने जो मार्केट लगाया था, इट आल्सो रिप्रेजेंटेड वीकली मार्केट, राइट? द शॉप्स व्हिच यू गाइस पुट अप देयर वर द परमानेंट शॉप्स। No, ma'am. They were not permanent shops, right? So after you put up, you brought your stuff, you put up your shops, and you took your stuff back, right? जैसे आप अपने शॉप्स लगाई थी, ऐसी ही शॉप्स लगती हैं वीकली मार्केट में। वहाँ पे उनके पास में परमानेंट शॉप्स नहीं होती है, जिसकी वजह से ही वी गेट थिंग्स चीपर इन द वीकली मार्केट। बताओ, कैन यू टेल मी व्हाई डू वी गेट थिंग्स चीपर इन द वीकली मार्केट? बताइए।
Why are things in weekly market cheaper? Mom, because they do not have to give rent or electricity fees or the fees to their workers. Exactly, absolutely correct. But the weekly market things are cheaper because they do not have permanent shops. उनके पास कोई permanent shops नहीं होती हैं जिसकी वजह because of which they do not have to give rent. ना उन्हें rent की tension, ना electricity की tension, और इनकी ज़्यादा जो help होती है वो भी इनके वही करा देते हैं जो इनके family members होते हैं. So इसीलिए they also do not hire, or they don't even hire workers. तो उन्हें उनको भी wage देना नहीं पड़ता है. Right? Understood? Yes, mom. ठीक है? This is the reason we get Yes, ma'am. things cheaper in the weekly markets. Chalo. Then we read that uh, many things in weekly markets are available cheaper rates. क्योंकि एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पे एक ही जगह पे हमें बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है. सो वी गेट वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो क्या होता है, इसकी वजह से ही वहाँ पे चीज़ें और सस्ती मिल जाती हैं. हम कह रहे हैं कि भाई आप भी कोई चीज़ ले लो. The other person is also selling the same thing, and if you're not going to give us at this price, then we're going to buy from the other shop. So that is also one reason because of which these people sell us things at cheaper rates. Okay, Okay, understood? ma'am. Yes, तो ये ma'am. हो गई हमारी. और एक और एडवांटेज वीकली मार्केट की है that we can get everything at one place, right? Everything is available at one place, like whether from utensils, clothes, grocery, veggies. You don't have to move from place to place. You'll get everything at one place, and people prefer going to a market where they have a choice and variety of things, right? Now let's talk about shopping complexes and malls. Suryansh Avasti, would you like to read? Suryansh, Shaurya Gangwar, Shreyansh Patel. Okay, what Mom, about can I? yes, Shreyansh? Read. Mom, shopping complex and malls. Yes, beta. Okay. There are other markets in the urban area have many shops, popularly called shopping complexes. These days, in many urban areas, there are multi-storied, air-conditioned buildings with shops on different floors, known as malls. In these urban markets, consumers get both branded and non-branded goods. Branded goods are expensive, often promoted by advertising and claims of better quality. The companies producing these products sell them through shops uh, in large urban market and at times through special showrooms. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. ठीक है. राइट, देखो अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो होते हैं यहाँ पे, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दे वी मोस्टली गेट द ब्रांडेड कंटेंट, राइट, द ब्रांडेड थिंग्स. यहाँ पे ब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों ही मिलती हैं. बट ये जो होते हैं वीकली मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. दे आर वेरी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, बड़ी ब्रांडेड शॉप्स होती हैं यहाँ पे, एयर कंडीशन शॉप्स होती है. राइट, सो दैट्स द डिफरेंस व्हिच यू गेट इन द weekly markets and they have. Secondly, you also find that here things mostly branded things are being sold, and जो branded चीजें होती हैं they are expensive as compared to the non-branded things, क्योंकि उनकी advertisement बहुत अच्छे से कराई जाती है. And जो brands होते हैं यहाँ पे normal store में मिल जाएंगे आपको. Otherwise some brands have designated stores for, मतलब कुछ brand जैसे होते हैं जिनके अलग से उन brands के showrooms होते हैं. You can also go and get the stuff from those showrooms, है ना. And branded stuff is expensive, and उनकी quality भी जो non-branded stuff होता है उससे कहीं बेटर ही होती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज होलसेल मार्केट. श्रेयांश आप ये भी पढ़ लो बेटा. होलसेल मार्केट. Wholesale market. Every city has areas for wholesale markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawkers
Small shopkeepers, retailers purchase items from a wholesale market. Right, a wholesale market में क्या होता है, like in the retail market, the people who are actually going to reuse the stuff go and buy things from there. But in a wholesale market, the people who have to buy the stuff further buy things, right? जिन्हें आगे जाके वो चीजें बेचनी होती हैं. Right? For example, if I have a shop, then I will go to buy stuff from the wholesale market. In the wholesale markets, you have to buy stuff at in bulk, and you can also get it at cheaper rates. Bulk में भी खरीदना पड़ता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है. ठीक है? Clear? Yes, Yes, ma'am. Cool. Now next we have medium of transaction in the market. Hmm. चलो रिद्धि. Can you hear me? Riddhi? Yes, ma'am. Yeah. Read medium of transaction in the market. Okay, ma'am. Medium of transaction in the market. Most of the transactions in the Indian market are carried through cash, but keeping in mind the disadvantages of cash transaction, Indian government is promoting cashless transaction. India continues to be driven by the use of cash. Less than 5% of all payments happen electronically. Cashless India is the great mission launched by the government to reduce the dependency of Indian economy on cash. The cashless economy help in tackling a wallet full of notes, which is not safe in a world full of antisocials. Moreover, we can use digital economy for all kind of transaction such as a bill payment, fees payment, funds transfers, rechange, etc. It will ensure a black money free India, or rather than so-called parallel economy where people bypass the bank to commu- accumulate money without coming under the purview of tax. A cashless economy is one in which all the transactions are done using cards or digital means. The circulation of physical currency is minimal. The Digital India program is a flagship program of the government of India which with a vision of transform India into digitally empowered society and knowledge economy. Fa- Faceless, paperless, cashless is one of the professional rule of digital India. Chalo. Right, so if we talk about digital in like the medium of transactions in the market, then most of the transactions in the market are carried through cash. The transactions होते हैं वो cash से ही होते हैं. But keeping in mind the disadvantages of cash transactions, but अब हम क्या करते हैं? अब हम cash transactions के disadvantages को भी ध्यान में रखते हैं कि यार इससे क्या क्या दिक्कतें भी हो रही हैं. आजकल लोग cash कम transaction रखते हैं, right? मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन की क्या दिक्कतें होती हैं. सो नाउ द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन कि नाउ यू डोंट नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर. देखो सबसे इजी एग्जांपल तो हमारे पास यूपीआई का है ना. एवरीबॉडी इज यूजिंग यूपीआई, राइट? लाइक गूगल पे, पेटीएम, दे आर यूजिंग दैट टू डू ट्रांजेक्शंस व्हिच इज वी कॉल डिजिटल इंडिया. India continues to be driven by the use of cash. Less than 5% of all payments happen electronically. अभी भी लेकिन इंडिया जो है वो ज़्यादातर कैश पे ही चल रहा है. 5% से भी कम पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं.
Cashless India is a great mission launched by the government to reduce the dependency of Indian economy of cash. जैसे कि हम कैश कम यूज करें, cashless economy helps in tackling a wallet full of notes which is not safe in the world of anti socials. यहाँ पे आपको चोरी करने का इतना डर रहता है तो आपको इतने सारे कैश लेके कैरी करने का डर नहीं लगेगा. Right, moreover we can use digital economy for all kinds of transactions, चाहे वो bill payments हो, fee payments हैं, funds transfer, recharge, everything could be done online now, right? So it will ensure a black money free India. अगर चीजें online होंगी तो वहाँ पे black money या फिर corruption भी बहुत कम हो जाएगा, right? Rather than so-called the parallel economy where people bypass the banks to accumulate money without coming under the purview of tax. लोग पैसों को जुगाड़ करके लोग बैंक से थ्रू ना देके पैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लेन देन करके they are just trying to bribe people. अगर कैशलेस इकोनॉमी रहेगी तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन कार्ड्स या डिजिटल मीन से होंगे. Circulation of physical currency is minimal. Digital India program is flagship program by the government of India with a vision of transforming India into digitally empowered society and knowledge economy, faceless, paperless, and cashless in one professed role of digital India. Right? So our chapter is completed. Tomorrow we will do the exercise and question answers. Tomorrow be ready with your books and notebooks both. Okay, children? Okay, ma'am. Any doubts anybody is having, you can ask me right now for the meeting No, is over. You can ask it tomorrow as well. You can go through the chapter today and ask me the doubts tomorrow. Okay? Clear? Okay, ma'am. Fine, children. See you tomorrow.